Good evening, all of you. And this is a beautiful question created by me. And let's see if you can answer this or not. Let Ti ABC be conditions on ABC belongs to real for all I 1, 2, 3. And we have some statement given T1, T2, T3, T4 with a restriction on ABC, right? As you can see on the screen. Now, if Ti ABC must imply Si ABC for all I 1, 2, 3, then which of the following statement is correct? So it will come as a multiple correct question in JEE Advanced, having a weightage of 4 marks. Now clearly, just by looking the question, you might be getting a feel of something. What feel we are getting? Now clearly, even if I don't know anything, still b square minus 4ac reminds us of a quadratic structure. B square minus 4ac is discriminant because it's doing discrimination, right? Next is we have terms like a greater than 0, a plus b plus c is appearing, a minus b plus c, 4a minus 2b. So all these things are familiar, or at least it should be familiar. In what sense? Is it's giving a full feel now of a quadratic. It's this expression, right? I'm forced to think of this. Otherwise, what we'll do, like let's say if a is greater than 0, and if you apply a minus b plus c greater than 0, does it implies the first term? Let's say from this two, can we conclude like there exists some t greater than minus 1 such that a square equals minus bt minus c. Of course, we know a is positive, so we can write a is greater than b minus c. And since a is positive, so this quantity itself is positive quantity. And if a positive quantity is greater than something, so b minus c can be positive, can be negative, and can be 0. So we can't conclude anything about b and c from the behavior of b or c. Okay, although this problem can be solved without quadratic also, but it will take a huge lot of effort. And with quadratic, the solutions will be very decent. And here we go with the solution. So what does first statement basically talks about? It simply talks of as if in this expression f of x, a is positive. It means we have an upward parabola. And f of minus 1. F of minus 1 is a minus b plus c, and that's negative. It means at minus 1, I must have a negative answer, and it must be upward parabola. So if it is upward parabola with a 1 point negative answer, definitely 2 real root is guaranteed. One will be more than minus 1, other will be less than minus 1. And that's also the first card, because there exists some t greater than minus 1 such that at square plus bt plus c equals 0, which means yes, there is one root more than minus 1. In fact, there is other root also less than minus 1. So see how beautifully we have solved this with location of root. Second is, does T2 implies S2? So T2 is what? Again, f of 1 is negative. So this time at 1 we have negative output. And what about 4a minus 2b? That gives a hint of ax squared to be 4b, means x will be plus minus 2. And since we have coefficient x has to be minus 2, so second represents f of minus 2. So if f of 1 is negative and f of minus 2 is positive, so now clearly we can see, and with this condition, I can think of a quadratic x square plus bx plus c which satisfy these two properties. Now some of you might tell like, why you are thinking for quadratic if just I have to solve this problem T2. See, in this universe, I can always make a quadratic expression having coefficients ABC such that they satisfy this relation. And now I have a beautiful geometrical way of visualizing that. तो एफ ऑफ 1 पे नेगेटिव है, एफ ऑफ माइनस 2 पे पॉजिटिव है, और क्वाड्रेटिक है मीन्स पैराबोला है, तो आपको एक ना एक बार जिंदगी में अर्थ सरफेस को कट करना ही होगा. इट मीन्स देयर इज गारंटीड वन रूट बिटवीन माइनस टू टू 1 एंड वन रूट मोर देन 1. इसका मतलब इसका डी वैल्यू तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा, तो S2 इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड पे आए. थर्ड इज टेलिंग एफ सी इज पॉजिटिव. सी मीन्स एफ ऑफ 0 इज पॉजिटिव. Second is f of minus 1 is positive and minus b by 2a. Minus b by 2a still has a geometrical significance. This represents x coordinate of vertex. That belongs to 0 to 1. तो अब देखो कितना information आया. 0 पे f of 0 is positive. f of minus 1 is also positive. अच्छा, तो 0 पे कुछ positive answer है, minus 1 पे positive answer. May not necessarily be same anything, okay? And the vertex lies between 0 to 1. Now the vertex lies between 0 to 1. Condition what we are having, we know at 0 we have positive output, at minus 1 we have positive output,
एंड वर्टेक्स राइट इन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में वर्टेक्स कहीं ना कहीं होगा. तो अगर वर्टेक्स यहाँ पे होगा 0 से 1 के बीच में, सो वी माइट हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ, -1 पे पॉजिटिव, 0 पे पॉजिटिव एंड वर्टेक्स इज लाइंग बिटवीन दिस. तो यहाँ पे कैन वी नेसेसरली टेल d इज लेस देन 0. द क्वेश्चन इज मस्ट इम्प्लाइज. तो इस केस में तो d लेस देन 0 फाइन है, लेकिन इज इट पॉसिबल टू हैव समथिंग एल्स? ऑफ कोर्स इज समथिंग एल्स. वी कैन हैव वर्टेक्स लाइक दिस ऑल्सो, राइट? So even if d is positive, still it will satisfy all these three conditions. So it means this is not must. Okay. So with this condition, we can't necessarily tell b square minus 4ac less than 0. चलो लास्ट क्वेश्चन सिमिलरली a माइनस बी माइनस सी इज एफ ऑफ -1 और दूसरा आ गया एफ ऑफ -3 लेस देन 0. इट मीन्स -1 पे जो भी आउटपुट है और -3 पे जो भी आउटपुट है वो दोनों अपोजिट है. अगर ये सपोज पॉजिटिव होगा तो दैट इज़ नेगेटिव. तो फिर डेफिनेटली बाय क्वाड्रेटिक फंक्शंस कंटिन्यूटी वन ऑफ द रियल रूट इज गारंटीड फ्रॉम -3 to -1. अब अगर एक रियल रूट है, क्योंकि -1 पे सपोज पॉजिटिव है तो -3 पे नेगेटिव है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो वापस इसको फिर अनंत पे जाना ही होगा. इट मीन्स नाउ आई कैन गारंटी देयर इज वन रियल रूट बिटवीन -1 एंड -3 एंड अदर रियल रूट लेस देन -3. वो कुछ भी हो सकता है, -4 -7 कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? कुछ भी. अब देखो ये क्या पूछ रहा है. S4 is this, means S4 we have to conclude about f of 1 and f of 4 if a is positive. अब why they have given f a is positive? क्योंकि देखो एक निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है -1 पे निगेटिव आ जाए और -3 पे पॉजिटिव आ जाएगा, तब तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा. ठीक है. सो फॉर ए पॉजिटिव विल हैव दिस अपवर्ड पैराबोला. अब अपवर्ड पैराबोला के केस में क्या होगा? सिंस -1 पे पॉजिटिव है तो 0 पे भी पॉजिटिव होगा, 1 पे भी पॉजिटिव होगा, 2 पे भी पॉजिटिव होगा. ठीक है. 4 पे भी पॉजिटिव होगा. तो ये क्वांटिटी खुद में पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा अंडर दिस कंडीशन. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. In fact, this problem is taken from my book, which is coming soon, and for those who are writing this year GE Advanced, अभी प्रिंट करना बाकी है, so it will take time. लेकिन आपको हर एक चैप्टर्स में ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड मे बी जो 2025 में स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको वो पूरा कंटेंट एज ए बुक फॉर्म मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है. तो स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री. एट द सेम टाइम आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम अच्छा बनाने का क्या कंसिक्वेंसेज है. अब एक प्रॉब्लम से आप लोकेशन ऑफ रूल का फुल आइडिया समझ में आ गया. ठीक है. तो आई ऑलवेज फील एज ए टीचर लाइक अ गुड प्रॉब्लम एंड मोर एवर रिलेवेंट प्रॉब्लम फॉर जे एडवांस, जिसमें ए स्मार्ट प्रॉब्लम हो. ठीक है. आई कॉल इट डेंजरसली ब्यूटीफुल. क्वेश्चन देखने में अच्छा लगे और ऑल दो यू कैनॉट सॉल्व इट, लेकिन यू मस्ट बी हंग्री एनफ टू सॉल्व इट, विच इज़ एग्जैक्टली हाउ जे एडवांस मेक्स देयर पेपर. ठीक है. अब जब घर आते हो और एडवांस का सॉल्यूशन देखते हो तो आपको लगता है अरे ऐसा तो हम भी सोच सकते थे. तो उस टाइप का प्रॉब्लम इज नीडेड इन द मार्केट, एंड डेफिनेटली आई एम डूइंग अ ग्रेट वर्क, आई फील सो, by providing this kind of content.